Good afternoon, all of you. Is my voice is audible? Yes. Is my voice is audible? Yes, sir. Okay. So we'll wait for a minute. So meanwhile, let me share the attendance. So you can scan the QR code here for the today's attendance. Okay, so most of you are joined. Start up the class. Yeah, so what we are discussing in the previous class और in the last class में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था थोड़ा कोई एलोबरेट करो. Yes. Sir, serial schedule or interleaved schedule? या तो पहले तो हम लोगों ने सबसे पहले सीखा था कि शेड्यूल क्या होता है. ठीक है, तो कोई बताओ शेड्यूल क्या होता है. व्हाट इज शेड्यूल? सो व्हाट इज शेड्यूल? Sir, process of grouping the transaction in predefined order. यस, अगर हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है, सपोज T1 से लेकर Tn प्रोसेस है. ठीक है, तो अगर हम इस सभी प्रोसेस को एक ग्रुप में रखेंगे और एक प्री डिफाइंड ऑर्डर रहेगा. ठीक है, देन हम उसको बोलेंगे इट इज शेड्यूल. फाइन, इट इज क्लियर. देन शेड्यूल्स आर टू टाइप्स. हम लोगों ने देखा फिर दो टाइप के शेड्यूल. एक हो गया आपका सीरियल शेड्यूल और एक हो गया नॉन सीरियल बोलते हैं या फिर इंटरलीव बोलते हैं. ठीक है, कभी कभी इसको नॉन सीरियल बोलते हैं या फिर इंटरलीव बोलते हैं या फिर पैरेलल बोलते हैं या फिर कॉन्करेंट बोलते हैं. Fine, scheduling can be two types. One is serial, second one is non-serial or interleave. So what is serial schedule? Serial schedule क्या होता है? कोई बता दो जल्दी से.
तो व्हाट यू मीन बाय सीरियल शेड्यूल? कब हम बोलेंगे शेड्यूल सीरियल है? Sir, when transactions are executed one after the other. यस, अगर हम बोलेंगे एक के बाद एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा, मतलब सपोज हम लोग का जो प्री ऑर्डर अगर लेते हैं T1 पहले, फिर T2, फिर T3, ठीक है? तो सीरियल शेड्यूल में क्या होगा, पहले T1 एग्जीक्यूट होगा, मतलब T1 का सभी इंस्ट्रक्शन, ठीक है, या ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक कोई और ट्रांजेक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। मतलब जब T1 कंप्लीट हो जाएगा देन हम लोग T2 को एग्जीक्यूट करेंगे। जब T2 एग्जीक्यूट हो रहा है तब कोई भी अदर ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट मीन्स जब T2 कंप्लीट होगा तब हम T3 करेंगे। फाइन। तो सीरियल शेड्यूल करने से क्या होता है, फर्स्ट बेनिफिट क्या होता है, आपका जो डेटा कंसिस्टेंस रहता है, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था डेटाबेस, जिस डेटाबेस पे हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी डेटाबेस पे ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड ऑफ द कंप्लीट ट्रांजेक्शन, ठीक है, एंड ऑफ द कंप्लीट ट्रांजेक्शन आपका डेटाबेस क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंस होना चाहिए, मतलब आपका जो वैल्यू है वो प्रिजर्व होना चाहिए, ठीक है। तो डेटाबेस कंसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखना है जब कभी भी हम लोग सीरियल शेड्यूलिंग करते हैं, ठीक है, तो whenever perform serial scheduling it will guarantee or it will be confirm that your database will be consistent. Clear this point? First and वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करोगे या शेड्यूल करोगे आपका डेटाबेस कंसिस्टेंस होना चाहिए। अगर आप लोग सीरियल शेड्यूलिंग कर रहे हैं तो हम गारंटी से बोल सकते हैं कि हम लोग का जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंस रहेगा। क्लियर? नाउ कोई जल्दी से बता दो व्हाट इज नॉन सीरियल शेड्यूलिंग और इंटरलीव शेड्यूलिंग? यस, व्हाट इज नॉन सीरियल और इंटरलीव शेड्यूलिंग? Sir, when transaction is started before the ending of first transaction. यस, इंटरलीव या नॉन सीरियल शेड्यूलिंग क्या है? सपोज सेम का एग्जांपल लेते हैं, T1, T2, T3 तीन ट्रांजेक्शन है, सपोज T1 पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। नाउ इन नॉन सीरियल शेड्यूलिंग या फिर इंटरलेव शेड्यूलिंग में क्या होगा, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस और बिफोर द कंप्लीशन ऑफ ऑल द ऑपरेशंस ऑफ T1, व्हाट आई विल डू, आई विल एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन ऑफ T2, ठीक है। सिमिलरली बिफोर द कंप्लीशन ऑफ T2 इंस्ट्रक्शन I will execute the T3, or I can say at any instant of time, ठीक है, at any instant of time, किसी भी टाइम इंस्टेंट में more than one transaction अगर सॉरी मोर देन वन ट्रांजेक्शन अगर एग्जीक्यूट हो रहा है तब हम उस शेड्यूल को क्या बोलेंगे, नॉन सीरियल शेड्यूलिंग या फिर इंटरलीव या फिर पैरेलल शेड्यूलिंग बोलेंगे। फाइन। तो अभी एक चीज याद रखना है नॉन सीरियल शेड्यूलिंग या फिर इंटरलीव शेड्यूलिंग में, सो इफ यू परफॉर्म नॉन सीरियल शेड्यूलिंग और इंटरलीव शेड्यूलिंग द डेटाबेस मे बी कंसिस्टेंट और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, ठीक है, वी कैन नॉट गारंटी दैट। अगर हम लोग नॉन सीरियल शेड्यूलिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो हम गारंटी से नहीं बोल सकते हैं कि हम लोग का जो फाइनल डेटाबेस होगा वो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। इट मे बी कंसिस्टेंट, okay, it may or may not. Fine. So this is a problem because हम लोग को क्या करना है, हमेशा डेटाबेस को कंसिस्टेंस करना है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं होगा तो जो भी डेटा हम लोग को रिट्रीव होगा वो वैलिड इंफॉर्मेशन नहीं होगा। देन द क्वेश्चन राइजेस, सर अगर ये डेटाबेस को कंसिस्टेंस नहीं दे रहा है, व्हाई शुड वी यूज नॉन सीरियल और इंटरलीव शेड्यूलिंग? फाइन, व्हाई शुड वी यूज नॉन सीरियल और इंटरलीव शेड्यूलिंग? सो एनी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्यों हम लोग यूज करेंगे? यस, so what is the problem here? Problem is your database will be consistent or may not be consistent. There is a chances that database will be inconsistent when you're performing and non-serial scheduling. But even though it is causing this problem, we will always go for non-serial scheduling. Why is it, what is the reason why we will go for non-serial scheduling?
Yes. To increase the efficiency. Yes, to increase the efficiency. Or so in case of what happened here, now we will be, as we are already studying operating system also, but in this native behaviors we will study with respect to transaction. So again, the transaction may require some other properties. Instead of reading and writing, it requires other work also. So what we can do, so we can save some time. Okay, save some time, or to increase the efficiency of the database, or efficiency with respect to the number of transactions completed per unit of time. Okay, so what we'll do, we'll always go for the non-serial scheduling. Okay, the only reason is to increase the efficiency of the system, so that क्या होगा, अब कम समय में ज्यादा ट्रांजेक्शन कर पाओगे. नहीं तो क्या होगा, एक ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, फिर वेट करोगे, फिर दूसरा ट्रांजेक्शन होगा, फिर वेट करोगे, फिर तीसरा ट्रांजेक्शन होगा. ठीक है, तब सपोज एटीएम का केस लो है, एटीएम से पैसा निकालना है, अगर वो सीरियल शेड्यूलिंग करेंगे हम लोग, तो अब क्या होगा, एक पर्सन को कंप्लीट करने के लिए अब क्या होगा, 10 मिनट लगेगा पूरा. तो अब 10 मिनट लगेगा तो क्या होगा, एक लंबा सा लाइन बन जाएगा. ठीक है, तो इंक्रीज दैट और टू रिड्यूस दिस ट्रांजेक्शन टाइम, सो व्हाट वी विल डू, सो वी विल परफॉर्म ए नॉन सीरियल शेड्यूलिंग. फाइन. तो हम लोगों ने पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था शेड्यूलिंग क्या होता है, और दो टाइप का डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग पढ़े. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस, आगे पढ़ेंगे. अभी पढ़ेंगे इक्विवेलेंट शेड्यूल क्या होता है, देन सीरियबिलिटी क्या होता है, देन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरियबिलिटी. ओके, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर आगे क्लियर नहीं होगा, इसलिए बोल रहा हूँ. दैट इज द रीजन आई हैव एक्सप्लेन वन सेकेंड. ठीक है, इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू टिल नाउ व्हाट वी आर डिस्कस. So these are already we discussed. Now this is a serial scheduling because the transaction is performed one after another. Now this is again, let's see. Now this is a non-serial scheduling because at the same time you can see two transactions are performing. Fine. Okay. So today we will going to learn what you mean by equivalent scheduling. Okay. What you mean by equivalent scheduling. Now suppose there is two scheduling, S1 and S2. Fine. Now I am saying that now suppose S1 is your non-serial scheduling. S1 क्या है आपका non-serial scheduling है, and S2 क्या है आपका serial scheduling है. ठीक है, this is serial scheduling, this is non-serial scheduling. Now I can say, when I can say S1 is equivalent to S2. Okay, when I can say these two transaction equivalent, that means both the transaction will be same if they produce the same result after execution. That means जब हम S1 को रन करेंगे, ठीक है, एग्जीक्यूट करेंगे, एंड S2 को एग्जीक्यूट करेंगे, देन अगर दोनों का जो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है, दोनों का जो फाइनल रिजल्ट होगा किसमें, डेटाबेस में जो दोनों का फाइनल रिजल्ट होगा, अगर वो फाइनल रिजल्ट दोनों केस में सेम होगा, देन हम लोग बोलेंगे both the schedules are equivalent. Fine, both the schedules are equivalent. Clear? Now this schedules can be, now this can be non-serializable, it can be serializable, और both can be, ये भी serializable schedule है, serial schedule है, ये भी serial schedule है, और both can be non-serial, ये भी non-serial, ये भी non-serial. अगर दोनों का फाइनल आउटपुट एग्जीक्यूट करने के बाद सेम आएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट शेड्यूलिंग बोलेंगे. ओके, नाउ कैन सी डेफिनेशन. इफ टू शेड्यूल, okay, produces the same result after execution, that is after the executing the two schedules. Okay, now schedules are nothing but consist of set of transaction. So whenever you perform the set of transaction and they give the same result, then I can say, or we can set the schedules are equivalent. Clear what you mean by equivalent schedule? Now these schedules can be serializable or non-serializable. Okay,
And second thing, you have to remember that for different set of values, okay, for different set of values, this schedule gives the different result. Fine. So for example, now suppose this is S1 and S2. Okay, now if I'm saying both are equivalent, that means this is and this both are schedule, जब भी एग्जीक्यूट करोगे वो सेम रिजल्ट देगा. ठीक है, लेकिन सेकंड चीज क्या याद रखना है, अगर हम लोग सपोज पहले ए का वैल्यू है 500, ठीक है, और बी का वैल्यू है 500. नाउ वी आर परफॉर्मिंग सर्टेन टास्क. नाउ आफ्टर एग्जीक्यूटिंग, सपोज वी हैव टू ट्रांसफर एन अमाउंट ऑफ 50 फ्रॉम ए टू बी. नाउ आफ्टर द कंप्लीशन, ए का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ए का वैल्यू होगा 450 एंड बी का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू होगा 550. ठीक है. नाउ इफ यू परफॉर्म शेड्यूल 1, सिमिलरली व्हेन यू परफॉर्म शेड्यूल 2, देन आल्सो ए का वैल्यू क्या होगा 450 एंड बी का वैल्यू भी क्या होगा 550. If they produce the same set of result, I can say both are equivalent. Second point you have to remember about the equivalent C of the schedules. Whenever you change the value, okay, whenever you change the value or provide different set of values, suppose now given A ka value 1000, now B ka value is also 1000. Now what will happen? The final output or final result will be changes. The final result will be here. A ka value will be 950. This will be 1050. Okay, but for the both the schedule, the answer will be same. The answer will be same. So this is something about equivalency between the two schedules. Okay, I can say both the schedules are equivalent. Now you can see in this example, अगर हम ये example consider करेंगे, okay. So whatever I explained, just they are explained in this. Now let us explain the equivalent schedule with respect to this example. Now this is my schedule 1. Okay, so which type of schedule this one? Is it serial or non-serial? Which type of schedule? Non-serial. This is non-serial. Fine. Okay, I am writing non-S. And this is my schedule S2. So this is a serial scheduling. So I am writing S. Fine. So what I have to find, whether this schedule S1 and S2 are equivalent or not. So when it can be equivalent, if the final result in a database should be equal. Okay, अगर इसका जो final result होगा database में, मतलब basically value of A and value of B, and here also value of A and value of B. If it is equal, then I can say both the schedules are equivalent. Okay, now you can execute. You can take any value of A and B here. Now suppose same, you take A equal to what? 500. Initial value of A and final initial value of B is final before executing the schedule. ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम सेट ऑफ वैल्यू लेना, अलग नहीं लेना है. ठीक है, अलग लेंगे तो फिर अलग रिजल्ट आएगा, इसलिए हमने बोले अलग सेट ऑफ वैल्यू के लिए अलग रिजल्ट आता है. Now A equal to 500 and B equal to 500. Okay, now suppose I perform this schedule. Now this is a non-serializable. That means T1 and T2 both actually happen parallelly. Now A will be what happened? A will be read as 500. Now value of A is updated here. Okay, it is detected 50 from A. Now it will write the value of A, which will be 450. Okay, now it will be commit means it will be updated database A equal to 450. Now again it will read the value, which will be 450. Now temporary variable में क्या store कर रहे हैं? A into 0.05, which is of 45. Now A equal to A minus 45, which will be updated as 450 minus 45, which is 405. Now it will update the value of A, which is 405. Okay. Now again, once this step is completed, I will go back to here. Now value of B will be read, which is 500. Now B equal to B plus, which will be 550. Now I will update the value as 550. Now commit means update the value. Now again read B, value of B will be 550 as it is committed. Okay, that means it will update it. Now B equal to B plus temp, that means 550 plus what is the temporary variable, which is 45. It will be 45. Now write B, value will be 595. Now final commit. Now final value of A will be 405 and final value of B will be
500 and how much? 95. 590. Okay. Now again I will check for the schedule 2 whether the answer is kitna aa raha hai. Now again same, A will be 500. Now subtract the value, this will be 450. Now I will write A as a 450. Now value B of B क्या है? B का value 500. Now add 50 to it, which is 550. Write B as 550. Fine. Now again read the value of A, which is 450. Now temporary value just okay. A into this much, which will be 45. Now A will be A minus 45, which will be 450 minus 45. That will be 405. Fine. Now write the value of A. I will write the value of A, which is 405. Similarly, B. B का value क्या है यहाँ पर? 500. Okay. Oh, 550. Now B will be added to 50 rupees as temporary variable is 50. Now 550. Now write B. Sorry, temporary variable is 45. Now this will be 595. Now write the value 595. Now it is committed, means it is completed. Now you can see after completion of both the schedule, that is schedule S1 and schedule S2 on same set of data, okay, same set of data are giving the same result. Okay, if they are giving the same result, I can say both the schedule are equivalent. Fine, we can say both the schedule are equivalent. Okay, now important thing is now S1 and S2 can be of any category. That means both can be serial, both can be non-serial. Okay, and both can, one can be serial, one can be non-serial. You can take any category, but you have to remember the final result that we are getting, that should be same. Then only I can say two schedules are equivalent. Okay, any doubt regarding equivalency or equivalent between two schedules? Yes, any doubt? Okay, if there is no doubt, so we will move on. So this is something about how we will decide whether two schedules are equivalent or not. So make note of it, okay? So जो भी आपको लग रहा है आप just note down. Okay, so next topic that we will discuss, very important, which is called serializability. Okay, serializability is very important topic regarding the. So we can say both the schedule are. Okay, so before studying the serializability, let me discuss why we need a concurrent transaction in case of multi-user system. So what is the need of concurrent transaction or non-serial transaction? But there is 2 points. First point is to improve the throughput and resource utilization. Okay, so whatever the resources are there, so maximum utilizing the resources, and to increase the throughput, that means increase the efficiency of the system. Basically, we perform the non-serial scheduling, okay, or concurrent transaction, okay, so that we can increase the number of transactions executed in a given amount of time. Okay, so finally we will increase the your CPU utilization and disk utilization. Second point, to reduce the waiting time. Okay, while concurrently executing or scheduling non-serial will, okay, non-serial schedule करने से या concurrent execution करने से we can reduce the waiting time of a transaction. Okay, so we can easily explain this process with the help of example. So in the previous example, what we have seen there, in a case of serial scheduling, T1 or T2 should be waited until, suppose T3 should be waited until T1 and T2 must be completed. But in case of अगर serial scheduling होगा, non-serial होगा, तो क्या होगा? I can parallelly execute so that the waiting time, so whatever the waiting time for the T1, that can be reduced. Okay, now
with reference to the concurrency control. Okay, you have to remember there are two type of basic operation that is performed in a database. Okay, or we can say basic the operation or access operation that a transaction performed in a database are, first one is called read item. Okay, so what happened in the read item? The transaction read an object value of particular object called x. Suppose I say the object is x. So whenever I perform read operation, okay, basically it is denoted by r of x. ठीक है, कैसे डिनोट करेंगे? Small r of x. Now it's denoted by small r of x. What does it mean? What does it mean? It will, the particular transaction will read the value of x. Okay, value of x. Similarly, there is another operation that will be affect the database, which is called write item. So whenever you perform the write item, which is represented by w of x. Okay, so what w of x means? So we will write the value for the object. Write the value for the object. Now these are the two transactions. Okay, read and write. Basically affecting the database. Okay, database को जो affect करेगा, तो ये दो ट्रांजेक्शन के रेफरेंस में ही हम लोग रीड करेंगे, आइदर रीड ऑपरेशन और राइट ऑपरेशन. ठीक है, रीड ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आर ऑफ एक्स. सो व्हेनेवर आई राइट आर ऑफ एक्स, what you will understand, now this is a read operation. That means the transaction will read a particular value for an object. So whenever I write w of x, what does it mean? It means that the transaction is going to update the value of x in your database. Is it clear? These 2 points. Okay, this is clear, this 2 points, because in the coming lectures we are going to frequently use these two symbols. Instead of writing the entire thing, now we will write these two symbols. Okay, so this is basically read operation for an object, this is write operation for an object. Okay, and why we are performing the concurrent transaction means, because there are the basic two reasons. One is to reduce the waiting time, and second one is to improve the throughput and maximize the CPU utilization so that the efficiency can be increased. Fine. So once it is clear to all of you, so we will move to next concept, which is very important regarding to your serial or concurrent execution. Okay, which is called serializability. Okay, which is called serializability. So what is that? Let's understand the definition first, then I will give the example. So what do you mean by serializability? So a schedule is seriable if it is equivalent to some serial schedule. So what actually does it mean? हम लोग क्या बोले, सपोज एक शेड्यूल है S1, तो इस शेड्यूल को हम कब बोलेंगे ये सीरियलाइजेबल है. ठीक है, कब इसको बोल सकते हैं सीरियलाइजेबल है? अगर ये शेड्यूल इक्विवेलेंट होगा, किसके इक्विवेलेंट होगा? एक सीरियल शेड्यूल का इक्विवेलेंट होगा. इफ इट इज इक्विवेलेंट टू एनी सीरियल शेड्यूल, देन आई कैन से द शेड्यूल इज सीरियलाइजेबल. बिकॉज वी नो दैट, हम लोग को पता है सीरियल शेड्यूल हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा? कंसिस्टेंसी इन ए डेटाबेस. Consistency in a database is provided by the serial schedule. Fine, serial schedule. So whenever I use a non-serial schedule, basically we will use a non-serial schedule. Now the non-serial schedule is said to be a serializable. Okay, said to be serializable. कब बोलेंगे? When it is equivalent to the any serial schedule. Okay, that means the result obtained, okay, the result obtained by this should be equal to some serial schedule. Okay, now for example, we are having it, suppose the schedule is there. Now suppose consists of 3 transactions, again T1, T2 and T3. Okay, now this is not an order नहीं है. Suppose यहाँ पर 3 ट्रांजेक्शन है. ठीक है, 3 ट्रांजेक्शन है, T1, T2 and T3. तो हम लोग को पता है एक नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल में नॉन सीरियल शेड्यूल होगा, तो हम लोग ट्रांजैक्शन को कंकरेंट एनी ऑर्डर में वी कैन राइट एग्जीक्यूट इन एनी ऑर्डर.
Fine. Now this schedule, okay, now this is executing parallelly in any order. Now suppose T1 is also executing here, T2 is executing, T2 is executing. Fine. Now this is a non-serial scheduling. Okay. Now when I can say this is serializable, when I can say this is serializable, when I can say this is serializable, only when, okay, this schedule is equivalent to any serial schedule. That is, it can be either T1, T2, T3, or it can be T1, T3, T2, or it can be T2, T3, T1. Okay, so एक्सेट्रा all other possibility. तो अगर ये किसी भी एक से equivalent होगा, that means it is the equal result, then I can say this schedule is serializable. Fine. Now this definition is very important. What you mean by serializable, or what you mean by serializability? So what do you mean by serializability? Any schedule which is equivalent to a serial schedule, then I can say that schedule is serializable. Is it clear to all of you what I'm trying to explain? Yes, is it clear? Yes, sir. Clear? So in general, what I can say, okay, in general, what we can say, if it is a serial schedule, then only one transaction is allowed to execute at a time. That means there is no concurrency is allowed. बट एक्चुअली क्या हो रहा है, अगर एक्चुअली क्या हो रहा है देखेंगे, लॉजिकली क्या हो रहा है, और इफ यू सी दिस इज अ कंकरेंट एजुकेशन, ऐसा नो, व्हेन आई परफॉर्मिंग नॉन सीरियल एजुकेशन और नॉन सीरियल शेड्यूलिंग, व्हाट वी आर डूइंग कंकरेंट एजुकेशन, बट लॉजिकली क्या हो रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूलिंग which is non-concurrent execution. Okay, that is the reason every non-serial schedule should be serializable. ठीक है, जितने भी नॉन सीरियल शेड्यूल है हम उसको क्या करेंगे, सीरियलाइजेबिलिटी चेक करेंगे. क्यों चेक करेंगे? अगर वो सीरियलाइजेबिलिटी है तो वो आपका सीरियल शेड्यूलिंग है. अगर वो सीरियल शेड्यूलिंग है तो डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगा. दैट मींस only one transaction will be allowed to execute at any time. Fine. So there are two types of serializability we are having in our course. One is called conflict serializability. Second one is called view serializability. ठीक है, दो टाइप के सीरियलाइजेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे हम लोग व्हाट यू मीन बाय कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी एंड सेकंड वन इज कॉल्ड व्यू सीरियलाइजेबिलिटी. Fine. So let us understand the first type of serializability, which is called conflict serializability. Okay, so let me define what we mean by the conflict serialization. Okay, so I can say a particular given schedule be a conflict serializable if it is possible. So suppose a schedule is given. Okay, a schedule is given. Now I can say this schedule as a conflict serializable. Okay, I can say this schedule को क्या बोलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल बोलेंगे. किस केस में बोलेंगे, किस केस में बोलेंगे, एक कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल. ओके, कॉन्फ्लिक्ट serializable. Okay, if
I will able to, if we are able to perform swapping, okay, if we are able to perform between swapping between conflict instructions और conflict operations, ठीक है। तो क्या बोले, अगर ये मेरा एक शेड्यूल है, ठीक है, एक शेड्यूल है, नॉन सीरियल शेड्यूल है, हम इसको कॉन्फ्लिक्ट सीरियल कब बोलेंगे, अगर इस ट्रांजेक्शन में, अगर इस ट्रांजेक्शन में somehow we perform certain swapping, swapping किसके बिटवीन में, in between conflict instructions, okay, if we are able to perform the swapping between the conflict instruction to find the equivalent serial scheduling, to find the equivalent serial scheduling, then I can say that scheduling as a conflict serializable scheduling. Is it clear what I am trying to explain? The schedule can be said conflict serializable scheduling, as we have seen in the previous slide. So we are having two types of serializability. Fine. Two types of serializability. One is conflict serializability. Second one is your view serializability. View serializability. So when I can say the S is a conflict serializability, if I am able to perform swapping between whom, किसके बिटवीन सॉल्व करना है आपको, कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट इंस्ट्रक्शन के बीच में अगर आप स्वैपिंग परफॉर्म कर रहे हो, सो दैट वी विल अचीव ए सीरियल शेड्यूलिंग, ठीक है। स्वैप करने के बाद क्या आएगा आपका, द एंटायर रिजल्ट विल बी, और इट विल बी इक्विवेलेंट टू, इफ इट इज इक्विवेलेंट टू सीरियल शेड्यूलिंग, देन द पर्टिकुलर शेड्यूलिंग कैन बी सेड एज कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबिलिटी. Clear? Is it clear what I am trying to explain? So basically now we have to identify which are my conflict instructions are, or which are my conflict operations है, ठीक है। Once you will identify in a particular transaction, अगर हम लोग identify कर लेंगे कौन कौन सा मेरा conflict instructions है या conflict operations है, then I will decide whether I can perform a swapping between them or not. So basically 4 types of conflict instructions are there, okay. 4 types of conflict instructions are there. One is called read operation, okay. What it is called, read operation. Then it is your, one is your read write operation, third one is your write read operation, and fourth one is your write operation. So these are the 4 basic conflict operation that is present in my transaction. So we have to decide whether this instruction can be interchanged between 2 transactions, so that we can achieve a serial or equivalent serial scheduling. If it is so, then I can say the scheduling is conflict serializability. Clear? Clear? So as we are having only 1 minute, so I will not start this topic today. Okay, so I will discuss one by one what you mean by each and everything, how this can be used in conflict scheduling. So I will take your question. Any doubt in regarding today's class? So what we have learned today? So first of all, we learned what you mean by equivalent scheduling. Okay, what you mean by equivalent scheduling? Then we are learned about what you mean by serializability. Okay, serializability क्या है? Then what are the different type of it? Okay, basically there are 2 types. One is conflict serializability and second one is view serializability. Okay, then how to achieve a conflict serializability by swapping between the conflict instructions. Okay, so any question regarding today's class? Yes, any doubt? Okay, if you are not having doubt, so we will continue our lecture in next class from what you mean by conflict instructions and how it can be used for finding the conflict scheduling. Fine? Okay, then I will stop here.